Good afternoon to all of you. My screen is visible and my voice is audible. My voice is audible to all of you. Okay, well, thank you. Let me give a few seconds. I am sharing my screen as well. And before that, I want to recall you that in previous classes we started a chapter budget, and in that we started cash budget, functional budget, sales budget, production budget, and why the budget is prepared. It is a numerical statement prepared in advance, and it's a use to express that in future how we can control our various aspects like functionality that we have done in previous class. So as I told you that in this class that related to budget, this will be our last class, and I have a old book and you have a new book. So there is a difference of number of question that you have and I have. And I asked you that I will share some question with you. So I will send you a soft copy containing both uh, question as well as solution of. In this class, we will start some more example like machine utilization budget. Please guide me at which page number is this one so that everyone will watch it and read it. Yes, I will share soft copy today itself. Immediately after completion of class, I will send a soft copy. Okay, shall we start? I think it's time to start. Please read the question first. Understand the question first, because if this type of question come in examination, first understanding of your question is very important. Now, what is given in the question? Consider three article XYZ is produced in the factory. Passes through two cost centers. Data furnish the statement of, and you are required to compile statement for machine utilization in both of the center. That is, how many centers are there? Just consider at the end. It is given when the line comes both of the center. Immediately we may update that both center it is referring and how many product is given in the question. That is X, Y, and Z. What do you understand by the question that there is two center A, B and product X, Y, Z. These three product passes through center one as well as from center number second. So product X, Y, Z
is passing through from A as well as it is passing through center B. Now my voice is audible, I think so. Thank you. Next detail is given in the question is you are given sales, you are given opening stock, you are given closing stock. And closing stock equals to 2 month sales. Here same 2 month sales, 2 month sales. And further in the question it is given that machine hour per unit of product, that is per unit of product is given, that is X is 30 hours and 70 hours. अगर Y कॉस्ट सेंटर A में जाता है तो उसको यहाँ इतने hours लगते हैं और B में इतने hours लगते हैं. Am I right? Please reply. यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? Then further, what is given? Total number of machines. A पे इतनी machines हैं, B पे इतनी machine है, that is 284 and 256, and total machines available is 540, and एक machine का estimated time है 2500 per machine. Shall we start our solution? Should I prepare my own or make you understand in the same? Please reply. Okay. First, my first query is I want to know what is the purchases that we have made. So, how many purchases or what is the production? For that, I prepare a statement for product X, Y, and Z. For X, Y, and Z. What is sales? It is given in the question. Add closing stock minus opening stock. Rest we have purchase, or you can say production, whatever you want to say. Yes. So we have 4800, 2400, 2400. So could I say this is exactly half of it? There is no link. Why I am saying so? Because consider my calculation. I am doing this calculation here. 2400 into 2 by 12. Any one of you? How much it will work out? 400. Why so? ऐसा क्यों किया हमने? Because closing stock is given 2 months, right? So 2400 is annual sale. We divided by 12. So 1 month, right? So we have 400, 400, and 800. Similar calculation has been done. Less opening stock. Opening stock is given. It is 600, 300, and 800. This one is again given in question. So after this calculation, I have this plus this minus this, that is sales plus closing minus opening. I will obtain I will obtain purchase or production, that is 5000, 2500, and 2000. Is this one is clear? Is this one is clear? Please write okay or not. Okay.
अब क्या करेंगे, हम इसको दो कॉस्ट सेंटर ए और बी के लिए अलग अलग स्टेटमेंट बनाएंगे. Could I prepare for division A, product X, Y, Z, likely for division B, product X, Y, and Z. Please reply. This one is okay. This all calculation is for product, sorry, cost center A. This is for cost center B. For product X, Y, and Z. What is production? Production we already calculated. This is 5,000, 2,500, 2,000. Similarly, for B, 5,000, 2,500, and 2,000. Am I right, friends? This is production in units. Now, I'm going back to question. Why so? Just consider one more line in question. What is the time framework that is used? Consider time framework. This is time framework given in question. प्रोडक्ट ए का बी का सॉरी प्रोडक्ट एक्स का वाई का जेड का इन डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर ए लाइकली प्रोडक्ट एक्स वाई जेड का इन कॉस्ट सेंटर बी. सो आई एम राइटिंग हियर time requirement. What is the time requirement? Consider time requirement. It is 30 hours, 200 hours, 300, 30 hours, 70, 100, and uh, 20. Am I right? Am I right, friends? Okay. Now just consider this into this. This will give me. इससे क्या आएगा बताइए? आएगा क्या इससे? You please reply. इससे आएगा क्या हमारे पास? Total what? Total hours या time? Exactly. Total time is 150,000,000, 5 lakh, 60. और इन तीनों का टोटल हो जाएगा आपके पास. वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं. वर्किंग नोट अगर आपने वैसे ही निकालना है तो दैट इज 150 प्लस 5 lakh plus 60,000. This will give me likely. हम सेकंड का निकालते हैं. सेकंड का क्या टोटल आएगा? This into this, we will obtain 350. Thank you very much.
That means you understanding it. It is for A. Now for B, 350 plus 2 lakh 40, 2 lakh 50 plus 40. This give me 6 lakh 40,000. Now, question one. How many total machine is available? Total machine in cost center, in cost center A, that is 284. Am I right? So for product X, product Y, product Z, how many machine will be utilized? कॉस्ट सेंटर ए के बाद जो टोटल मशीन है मैं कितनी एक्स के लिए यूज करूं? देखिए एक्स का प्रोडक्शन है आउट ऑफ 7,10,000, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, टाइम, आई एम सॉरी, टाइम 7,10,000 में से 1,50,000 टाइम एक्स को चाहिए. दैट मीन नेक्स्ट वन इज 60,000 divided by 710,000 into 284. Am I right? Please reply. So we may have number of machine. This calculation says that it is 60, it is 200, it is 240, it is 24. So machine required 60, 200 and 24. This total necessarily will come out automatically how much? 284. Likely for cost center B, the total that we have done is 6 lakh 40,000, out of which time requirement by X is 3 lakh 50,000 into, for B it is 2 lakh 50,000 divided by 6 lakh 40,000 into, for C it is 40,000 divided by 640 into how many machines we have in department or cost center B. Total number of machines is 256. So after multiplication, we will obtain 140, 100, and 16. Right. So I'm writing here. It is machine requirement 140, 100, and 16, and this total is 256. Rajesh, you are saying two. How it is two? Might be some error while you are typing your answer. Here. So this is what budget we have prepared. Okay, no issue. Typing error is allowed, but conceptually you are required to be correct. Sometime in this pandemic condition, I am also using this whiteboard and like this. And sometimes I may find some typing error, but conceptual clarity is essential. Okay. After this, we have one more concept. थोड़ा थोड़ा मैं पीछे के क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ.
बजट तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बजट पे चल रहे हैं, फ्लेक्सिबल बजट। अभी हमारा ये जो बजट हुआ है, ये कौन सा बजट हुआ है? ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये कौन सा बजट पढ़ा है हमने? रिप्लाई कीजिए। मशीन यूटिलाइजेशन। डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में मशीन यूटिलाइजेशन बजट का मीनिंग क्या है? दैट यू हैव डिफरेंट कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर ए, कॉस्ट सेंटर बी, और काफी प्रोडक्ट इनमें से होके गुजरते हैं, से X1, X2, X3, and say again the same product is going to X1, X2, X3, it also passes to cost center B. And this having cost center 1 having some machines, and that machines are used common basis. मतलब मशीन जो है कॉस्ट सेंटर एक के पास है, कॉमन बेसिस का मतलब ये है कि वो एफिशिएंट है प्रोडक्ट X1 को भी बनाने में, X2 को भी बनाने में, और X3 को भी बनाने में। एम आई राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? लाइकली कॉस्ट सेंटर बी के पास भी कुछ मशीन्स हैं, एंड कॉस्ट सेंटर बी के पास जो मशीन्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट है X1, X2, X3 को बनाने में। राइट? तो हम टोटल में से कितनी मशीन, हाउ मच मशीन प्रोडक्ट X1 को देंगे, प्रोडक्ट X2 को देंगे, प्रोडक्ट X3 को देंगे, लाइकली कॉस्ट सेंटर बी, हाउ मच, हाउ मेनी मशीन, how many machine out of total is devoted by department or cost center B to different product X1, X2, and X3. Am I right? Please reply so that I move forward. Right. Let's begin with one more concept. Right. Next, we have to prepare flexible budget. Our next topic of today class is flexible budget. Uh, any one of you can reply in chat box. What do you mean by flexible budget? जो चेंज होता है, what is given? Given may be some information on the current capacity utilization. On the current capacity utilization is given. And what further given? There is some changes or order received by order received by organization, as a result of as a result which our production capacity utilization, it may increase most of the time or reduce, say due to lockdown, due to shrinking in demand, right? So, so there is there is some
changes in production pattern as a result of which cost also changes. Cost also vary. Flexible budget is prepared to incorporate flexible budget is prepared to incorporate such type of changes. Incorporate such type of changes. Am I right, friends? So first understand further that cost may be of three types. As far as we are talking about flexible budget, when it is fully variable, when it is semi-variable, or could I say it is semi-fixed, and it is fixed cost. In such a case, capacity increase or decrease. Capacity increase or decrease. Does it affect or not? Fixed cost does not affect fixed cost. Variable cost increase or decrease with respect to changes in capacity utilization. Capacity utilization. And what about semi-fixed cost or semi-variable cost? We break the two costs into two parts. We break cost into two parts. Break semi-fixed or semi-variable. You can say semi-fixed or semi-variable in two parts. First part is fixed component and second part is variable component. Am I right? This component will changes and this component remain same. Please reply. Have you understand? All of you, please reply. So I want to give you one example. I want to give you one example, and it's your time to prove that which one is fixed and which one is variable. And this is given at 30%, and this one is given at 50%. What is given? Say uh, sales unit, sales or say production unit. I say production units 300 and 500. Salary is given to me, and salary given to me is 600 and 1000. Uh, Raw material is given to me, say 450 and 750. Depreciation is given to me
Insurance is given to me 1,000, 10,000. Insurance is given to me say 500 and 500. Maintenance is given to me say 550. You can say it 800. And 1,000. Now, this one all figure I have taken hypothetical basis, right? All of my figures are imaginary, right? Now what my question is, all figure are hypothetical. You have to check which one is variable cost, which one is fixed cost, which one is semi-variable. Yeah, could I say semi-fixed? Can I start solution for it? Please reply. Yes, I'm getting a lot of answer. Thank you. That means you all already know or have aware of this. ये सारे ही अच्छे बच्चे मेरे पास हैं. Just consider two costs, depreciation and insurance. Is it changes or not? There is some percentage changes in them or not? Answer no. So first one, I'm writing fixed costs, depreciation and insurance. These are my fixed costs. अगर मेरे को पेपर में आ जाए 60% पे बना के दिखाओ ये, तो सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट लिखूंगा, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स, फिर फिक्स कॉस्ट में मैं डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस को एज इट इज 1,000 and 500, दैट इज आउटर कॉलम में 1,500 दिखा दूंगा. एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई. Yes. Now just consider at 30% what is the production and at 50% what is the production. At 30% your production is 300 units. At 50% your production is 500 units. That means at 60% your production will be 600 units. And what is your salary? Salary in the question at this level it is given to you 600. At this level it is given to you 1,000. So I want to know what is variable cost per unit. Variable cost per unit. पहले ये बताइएगा. Percentage changes in cost divided by percentage of, I'm sorry, don't write percentage change in cost, just write change in cost. Just write changes cost. Changes in cost divided by changes in output. What is the changes in cost? Consider here it is 1,000 minus 600 divided by 500 minus 300, that is 400 by 200, that is 2 rupees per unit. Am I right? Rupees 2 per unit. Now,
After obtaining this 2 per unit, verify. What you verify that this 2 into में this 2 rupees, this 2 rupees, if I multiply by this 300, I will obtain, and this 2 multiply by 5, I will obtain 300 into 2, 500 into 2. So at 600, it is 600 into 2, that is 1200. So I'm going back, writing salary. Salary, it is 1200. Now what about raw material? Just consider raw material. 300 unit, 500 unit at 30%, at 50%. And what is the cost? 450, 750. At 60%, I want to know. आप लोग डायरेक्ट जंप कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट जंप मैं भी कर सकता हूँ, बट आई एम सेइंग थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। क्या डेंजर हो सकता है? डेंजर ये हो रहा है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये फुली वेरिएबल कॉस्ट है या पार्शल या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपको पता नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए ये है या ये, हमने क्या लिया? चेंजेस इन कॉस्ट divided by changes in output. So it is 300 divided by 200, which work out to be 1.5. 1.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 300 से तो 450 आएगा। बहुत बढ़िया बात है। अगर ये कॉस्ट के बराबर आ रहा है तो ये मेरी कौन सी कॉस्ट है? फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है। तो दिस विल वर्क आउट अगेन रॉ मटेरियल विल वर्क आउट 900। आउटर कॉलम में मैं 2100। Now, I'm coming to one more cost, which cost my next target is. The last cost is maintenance. Cost देखते हैं क्या? Any one of you can reply what is the cost? Or can I go back fully? Yes. 800 and 1000. 800 and 1000. This is 800. This is 1000. अब मैं वो फॉर्मूला लगा दूं? ये नहीं जो आप लगा रहे थे। 800 divided by 3 into 6. जरा देखते हैं। Changes in cost is 1000 minus 800 divided by 500 minus 300. That is 200 divided by 200. It will work out rupees 1 per unit. Rupees 1 per unit multiply by 300 give me 300, and rupees 1 per unit multiply by 500 unit give me 500. This is 800 and this total is 300. That means इसका कुछ component fixed cost है। तो fixed cost कितना है? rupees 500. ये बात समझ में आई है? Please all of you reply. If not clear, I repeat. If I have to repeat, you have to write it, repeat it. If it is clear, you can. If most of the student clear, if some of the student not clear, they can. Yes, Prem Pratap, I can repeat it, no issue. Okay. Prem Pratap, just consider again here what I am saying. आप पहले देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस की टोटल कॉस्ट है 800 रुपीज एंड 1000 रुपीज। यहाँ पे कितनी यूनिट्स हैं? 300 यूनिट्स और 500 यूनिट्स।
30% और 50% पे दिया हुआ है। तो मैंने वही निकाला, टोटल कॉस्ट में जो भी चेंजेस हो रहा है, टोटल कॉस्ट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन चेंजेस। 3 to 5 ये क्लियर है, प्रोडक्शन चेंजेस। So it is 1000 minus 800 divided by 500, 300। तो मेरे को पता चला कि ₹1 पर यूनिट ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने 1 रुपी को मल्टीप्लाई किया 300 यूनिट पे, क्योंकि ये तो सारा डाटा मेरा 300 यूनिट पे दिया हुआ है, ये सारा। तो मैंने 300 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 300, यानी कि ये हुई 300 मेरी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है 800, दैट मीन बैलेंसिंग फिगर मेरी कौन सी कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट। अंडरस्टूड और नॉट, प्लीज राइट यू एंड डी फॉर इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू नॉट अंडरस्टूड राइट रिपीट। ओके क्लियर। सो आई एम कमिंग बैक। अगर यही मेरे को 600 पे बनाने का बोला हुआ है स्टेटमेंट, तो मैं 600 पे कैसे बनाता, मैं वापस आ रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसके दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट वेरिएबल कॉस्ट ₹1 पर यूनिट इनटू में 600 यूनिट, और फिक्स कॉस्ट ₹500, आउटर कॉलम में 11। सो दिस स्टेटमेंट इज रेडी फॉर व्हाट, 600 यूनिट की टोटल कॉस्ट। अभी मैंने जो लिया है ये हाइपोथेटिकल है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, राइट। बेटर वी टेक सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कैन आई स्टार्ट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम योर बुकलेट? Okay. Consider illustration number 12. What is given, and we have to check all the things side by side. Okay. Monthly budget of a concern of two level of activities given to you. I think this is last illustration of your book. ये इसके बाद भी कोई और है? This is last illustration of your book. और भी कोई है? One more. Okay. So we do both of the illustration. Let's complete this chapter today. Monthly budget is given to you. Please read the question. Wages, consumable stores. So मैं यहीं पे एक काम कर रहा हूँ डिटेक्ट करने का। सॉल्यूशन तो हम चलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये कॉस्ट मेरी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट। कैसे पता चला, मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक तरीका है, वेरिएबल कॉस्ट है यानी ये पता चला। और अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो कौन सी कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट। हर्षिता,
Harshita Dipansha, I am not agree with you that amount is same. Yes, amount is same. This is one of the technique, but it is not only the technique. I am saying one more. थोड़ा सीख लेते हैं, सीखने में क्या जा रहा है, जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन एक बात मेरी सुनिएगा आराम से। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन वेरिएबल है या नहीं। ये चीज को चेक करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। क्या? चेंजेस ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन आउटपुट। जस्ट कंसीडर कि चेंजेस इन कॉस्ट हो रहा है या नहीं। जरा देखते हैं। 4000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 600, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 400। तो दैट मीन ये वेरिएबल नहीं है, दैट मीन ये फिक्स्ड है। वेरिएबल नहीं है ना, तो ये वेरिएबल है ना ये सेमी वेरिएबल है। एम आई राइट? यस ऑफ कोर्स। मैं फिर वही आ रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू आर राइट। एज अ स्टूडेंट मैं भी यही करता था, अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, फिक्स कॉस्ट। बट व्हेन आई कम टू नो मोर, तो हमारे पास वेरिएबिलिटी को चेक करने का एक तरीका है। पहले वेरिएबिलिटी चेक कर लो, अगर वेरिएबल नहीं है दैट मीन न्यूमरेटर में जीरो आ गया। एम आई राइट? तो वो फिक्स थी। अब जरा ये दो तो हो गए मेरे। अब इसके ऊपर देखते हैं। 2000 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 400, that is 800 by 400, it give me 2 rupees per unit। 2 into में 600 मल्टीप्लाई किया, 2 into में 1000 मल्टीप्लाई किया, 1200 2000। ओके। अब कंज्यूमेबल स्टोर का देखते हैं। 1500 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 400, that is 600 by 400 give me 1.5। तो 1.5 को मैंने 600 से मल्टीप्लाई किया, और 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1500 और 900। दैट मीन ये वाली और ये वाली दोनों वेरिएबल कॉस्ट हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई। मेरे को ये बजट बनाना है 80% कैपेसिटी पे, तो मैं 80% पे बना ही देता हूँ। फिक्स कॉस्ट ये 4000 दिया आएगा, ये 1000 दिया आएगा, ये 1.5 इंटू में 800 आएगा, और ये 2 इंटू में 800 आएगा। 2 into में 800 1600 1200। Am I right? Please reply. Okay. So better we start solution. Okay. Let's come to the point. We start solution. थोड़ा तरीके से करना है ना, इतनी जल्दबाजी एग्जाम में नहीं दिखानी। एग्जाम में एग्जामिनर चाहता है आपका आंसर नीट एंड क्लीन हो और कंसेप्चुअली करेक्ट भी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेटमेंट उसने पूछी है कितनी कितनी कैपेसिटी पे। एक तो उसने पूछा है फिक्स कॉस्ट बताइएगा, वेरिएबल कॉस्ट बताइएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बताइएगा, और अपना स्टेटमेंट बना के दिखाइए। 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, और 100% यूटिलाइजेशन पे। अगर आप मेरे को परमिशन दें तो मैं 120 पे भी बनाना चाहता हूँ। इफ परमिशन इज ग्रांटेड। ये हम अपने पास से ले रहे हैं, जो अगला पोर्शन ले रहे हैं। एक बार पेपर में आया हुआ है 120%। लेट्स बिगिन।
फर्स्ट स्टेप वर्किंग नोट। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा। वर्किंग नोट सबके लिए बनेगा। सबसे पहले बनेगा वेजेस के लिए। क्या चेक करना चाह रहे हो? कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? दैट इज changes in total cost at two different level of capacity divided by changes in production at two different level of capacity. This is what is the percentage changes. If you don't consider percentage changes, please take percentage changes in the production. So it is 2000 minus 1200 divided by 1000 minus 600. It will work out to be 800 divided by 400 rupees 2 per unit. अब rupees 2 per unit को आप 600 पे 1000 पे एक बार चेक कर लीजिए। 2000 आ रहा है और 1200 आ रहा है। ये वही है जो आप लेके चले थे। ये वही है जो आप लेके चले थे। यस, ये वही है जो आप लेके चले। दैट मीन ये फुली वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप सबसे पहले वापस जाइए। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से इस क्वेश्चन को समझिएगा। 60% पे 600 यूनिट्स है, so at 80% it will be 800 units, it will be 1000 units, it will be 1200 units. And first one you are taking wages, 2 per unit, 600, 2 800 and 2000 and 2 2400, 2000, 1600, 1200. This one is wages, first part. Second part will come in consumable store. Consumable store. Again, go back to working mode. Check. अब मैं चेकिंग के लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंज्यूमेबल स्टोर 1000 minus 600 और 1500 minus 900, 400, 600. This will work out to be 1.5. तो आपने 1.5 को मल्टीप्लाई किया 600 यूनिट से और 1000 यूनिट से और चेक किया कि ये 1500 ही आई और ये 900 ही आई। क्या वो सेम आया आंसर? आंसर यस। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। ये और ये सेम है। दैट मीन ये भी फुली वेरिएबल कॉस्ट है। हम वापस गए। कंज्यूमेबल स्टोर 1.5 आया था। 1.5 into में 1200 यूनिट, 1000 यूनिट, 800 यूनिट, 600 unit. It will work out 900, 1200, 1500 and 1800. Am I right, friends? ये अभी हमने ए किया है। ए क्या है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट। अब हम नेक्स्ट कॉस्ट पे आते हैं, मेंटेनेंस पे। चेक करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट है कैसे। तो ये फुली वेरिएबल है या नहीं?
तो मैं मेंटेनेंस के लिए कैलकुलेशन करूंगा। 1000 यूनिट माइनस 600 यूनिट, ये तो मेरी ये मनी मेंटेनेंस 1500 and 1100. So it is 400 divided by 400. We work out rupees 1 per unit. So 1 into में 600 और 1 into में 1000. ये वाला 1000 यहाँ से आया और 600 यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 600 आया, मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया। नहीं, अब ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? क्या ये डिफरेंस कांस्टेंट है या चेंज हुआ? आंसर ये डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट डिफरेंस ही आपका फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 500 और वेरिएबल कंपोनेंट कितना है? रुपीज 1 पर यूनिट। तो अगर आप 600 के लिए निकालेंगे तो निकालने का तरीका कुछ ऐसा होगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, आई एम डूइंग दैट, और मैं करके दिखा रहा हूँ अपने टेबल में। सबसे पहली बात, अब ये वाली कॉस्ट जो है ये मेरी ग्रुप कॉस्ट तो है नहीं। अब ये मेरी कॉस्ट है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट। इसको मैं नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग नंबर बी दे रहा हूँ। बी हेडिंग के अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज माय सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 500 तो वही है जो फिक्स कंपोनेंट का, 1 पर यूनिट एट 600 प्लस 1 पर यूनिट 800 प्लस 1 per unit at 1000 plus 1 per unit into 12. So it is 1700, 1500, 1300 and 11. ये समझ में आ गया तो मैं आगे चलूँ। इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल पे। ये भी कुछ ऐसा ही, आप करके बताइए क्या आ रहा है। मैं भी कर रहा हूँ सॉल्यूशन में। पावर एंड फ्यूल 2000 minus 1600, 1000 Iron minus Sandra. it is Iron is 400 and work per unit. So to be 1, 600 into 1 and 1 into 1000, that is 1000 and it is 600. That means ये match नहीं हुआ, this is 1600. That means fixed component कितना होगा? 1000 rupees का। fixed component कितना होगा? 1000 का। इसका टोटल 2000 आएगा और इसका टोटल 1600 तभी आएगा। That means 1000 rupees तो फिक्स है। सभी वेरिएबल ओवरहेड के अंदर पहला था मेंटेनेंस, अब है पावर एंड फ्यूल।
₹1,000 plus 1 into में 600, 1,000 into में 1 into में, sorry, 1,000 plus 1 into 800, 1,000 plus 1 into में 1,000, and 1,000 plus 1 into 1,200, 2,200, 2,000, 1,800, and 16. And the last cost is fixed cost. ये मेरी बात समझ में आई? आप सबका आंसर यहाँ आ गया? ये आप सबका आंसर आ गया है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका आंसर ना आया हो? इमीडिएटली यू कैन आस्क राइट नाउ, अदरवाइज फिर आप वीडियो देखिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। 1,000 कैसे आया? ओके, देखिएगा एक बार आराम से। व्हाट इज चेंज इन पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट में? देखिएगा क्या चेंज आ रहा है। जब आपकी 1,000 की एक्टिविटी थी तो इस पे कॉस्ट कितनी थी? 2,000। माइनस 600 की एक्टिविटी थी, उस पे कॉस्ट थी आपकी 1,600। तो डिनोमिनेटर में लिया आपने 400 और न्यूमरेटर में भी 4 आया, दैट मीन 1 रुपी पर यूनिट। हो गया वेरिएबल कंपोनेंट, 1 रुपी पर यूनिट। अब आप देखिएगा 600 पे कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 1 इंटू में 600, और इस पे दी कितनी हुई है? 1,600। तो इन दोनों का गैप कितना है? इन दोनों का गैप कितना है? 1,000। वो होगी आपकी फिक्स कॉस्ट। प्लीज रिप्लाई अगर समझ में आ गया तो राइट इट डाउन। ओके, राइट डाउन ओके अगर समझ में आ गया तो, so that I can proceed further. Thank you very much for your replies. I'm moving to next one ताकि हम इस क्वेश्चन को खत्म करें। Depreciation is fixed cost plus insurance is fixed cost due to shortage of space। मैं दोनों का यही प्लस करके लिख रहा हूँ 5,000 and it remain constant। अब आपने एक लास्ट काम करना है, इसका टोटल कॉस्ट निकालना है लास्ट कॉलम में। फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। इज इट? प्लीज रिप्लाई। अगला क्वेश्चन नॉर्मली था, नॉर्मल रहेगा करके। क्या नहीं मूव है? प्लीज रिप्लाई। ओके ओके। इट इज ऑल्सो आस्क कि पर यूनिट भी बताना है। अगर पर यूनिट भी बताना होगा तो नो इशू, एक कॉलम और क्रिएट करेंगे आप, है ना। इसका टोटल ये वाला डिवाइड कर देंगे आप हाउ मेनी यूनिट से? 600 से, डिवाइड बाय 800, डिवाइड बाय 1,000। एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई। क्लियरिटी हुई? Okay. आप थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, अगर बुक वाला दो पार्ट में डिवाइड करता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल का ये 1 रुपी पर यूनिट, 1 रुपी पर यूनिट, 1.5, 1 एंड 2। और मेंटेनेंस के अंदर हमारे एक आंसर आया था 500 और एक आंसर आया था 1,000, राइट। तो जैसे मैंने तीन कैटेगरी बनाई है, बुक वाला कहता है नहीं मैं दो कैटेगरी बना रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। आपके सर ने सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एक अलग कैटेगरी बनाई, राइट। यू कैन डू इन अकॉर्डिंग टू बुक एज वेल, नो इशू। Am I allowed to move for next illustration?
Please consider this illustration and please someone write page number so that student are in a position to check it out. Okay. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ समझ भी लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें सॉल्यूशन करते हुए आसानी हो जाए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं। एक्स केमिकल लिमिटेड जिनकी टू प्रोडक्ट है ए बी सी डी। रॉ मटेरियल आर इन द प्रोपोर्शन raw material are in the proportion 80% 40% 50% 50%, right? I'm coming to this। देखिएगा ए और बी का रेशियो देखिएगा ए रेशियो बी इट इज 80:20 एंड सी डी 50:50। तो जो आउटपुट है ए बी वो बनता कैसे है दो टाइप की इनपुट से इनपुट ए और इनपुट बी से और इनपुट ए का रेशियो क्या है 4:1। एम आई राइट? प्लीज ये बताइए ये समझ में आया पहले फर्स्ट पार्ट। और सी डी जो आउटपुट है आउटपुट सी डी वो टू टाइप की इनपुट से बनता है इनपुट सी इनपुट डी जिसका रेशियो 1:1 है या 50-50% यू कैन से। फिनिश वेट ऑफ द प्रोडक्ट ए बी एंड सी डी आर इक्वल of ingredient during the month of June। It is expected जून के महीने में आपको क्या दी हुई है it is expected 60 tons and it is expected 200 टन। ये सेल्स गिवन है। ये बात क्लियर है यहां तक क्लियर। तो नेक्स्ट वन अब आप देखिएगा इनपुट का भी और आउटपुट का भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। इनपुट का भी और आउटपुट का भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। प्लीज चेक इट आउट। हो जाएगा सिद्धि हो जाएगा। मैं क्लास में हूँ मैं कर दूंगा हो जाएगा। ए बी सी डी और ए बी एंड सी डी जरा आराम से क्वेश्चन में चेक कीजिएगा कि क्या कह रहा है ये। दीज ऑल आर योर इनपुट्स। एम आई राइट? इनपुट का ये वाला और ये वाला ओपनिंग स्टॉक गिवन है और ये वाला जो गिवन है ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। इसी तरह सी डी और ए बी सी डी ये इनपुट है। व्हेन आई एम सेइंग ए बी देन इट इज मीनिंग इज आउटपुट। तो ये आपके आउटपुट का ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह सी डी इज योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। प्लीज ये बताइए पहले ये क्लियर हुआ। जब हमें ऊपर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है नीचे हमें गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग दैट मीन इतनी इंफॉर्मेशन से या तो हम प्रोडक्शन या परचेज। अभी तो वर्ड प्रोडक्शन यूज करना बेटर रहेगा या परचेज यूज करना बेटर रहेगा। ओके
हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज सेल्स में आपने क्लोजिंग स्टॉक एडअप कर देना है और ओपनिंग को लेस कर देना है, ये हो जाएगा हमारा। एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई। और ये जो आंसर आएगा, ये अभी तक सारी गेम चल रही है यूनिट्स की। जैसे ही हम इसको कॉस्ट पर टन जैसे ही हम इसको कॉस्ट पर टन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो आंसर आने लग जाएंगे परचेजेस के, वो आने लग जाएंगे इन रुपीस। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछेगा वो बोलेगा प्रोडक्शन बजट बनाओ। प्रोडक्शन बजट बनाने के बाद पहले तो ये बता दो रॉ मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर बता दो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के बाद परचेज कितने यूनिट्स की चाहिए और कितने रुपए की चाहिए। एम आई राइट? क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलेगा। जरा चलते हैं नीचे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल द मटेरियल विल बी परचेज ऑन 3rd of June। ओके जी। अब आप बताइए कि तीन चार चीजें बतानी है। पहला तो प्रोडक्शन बजट। ओके। अच्छा एक बात बताइए, प्रोडक्शन बजट बताना है, प्रोडक्शन बजट किसका बनाओगे आप? प्रोडक्शन बजट बनाओगे किसका? मेरा क्वेश्चन है, ए का बनाओगे, बी का बनाओगे, सी का बनाओगे, डी का बनाओगे, या ए बी सी डी का बनाओगे? प्रोडक्शन तो ए बी सी डी का हो रहा है ना। और मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट ये किसका बनाओगे? वेरी गुड, ये बनाओगे ए का, बी का, सी का और डी का। एक्सीलेंट। और मटेरियल परचेज बजट यानी कि कॉस्टिंग, कॉस्टिंग भी किसकी करोगे? ए की करोगे, बी की करोगे, सी की करोगे, डी की करोगे? बेटे किसी को, किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं नहीं समझ में आया तो अभी मौका है, पूछ ले। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, थोड़ा सा हम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मुश्किल होगा दोबारा बता पाना। ओके, कोई रिप्लाई नहीं आया, दैट मींस सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है। लेट्स सी स्टार्ट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो बनाने वाले हैं, ए बी और सी डी का क्या बनाने वाले हैं? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ये भी गिवन है, इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगी। प्लीज रिप्लाई, दिस इज ओके। ओपनिंग कितना गिवन है, क्लोजिंग कितना गिवन है और सेल्स कितने गिवन है? सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 60 और 200। कहाँ गिवन है ये चेक कराता हूँ आपको, एक मिनट दे दीजिए। ये देखिए, ये 60, 60 और 200। इज इट ओके? तो मेरे स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करते, तो लगता है हाँ भाई मैं अकेला ही हूँ क्लास में। प्लीज रिप्लाई ना यार। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू यू 5 and 60। ये भी आपको गिवन है, एक टेबल गिवन है। और ओपनिंग इज ऑल्सो गिवन टू यू 10 and 50। तो बचा ही गया इस क्वेश्चन।
प्रोडक्शन आई जाएगा इनटू 55 एंड 210। अभी बात खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आप मेरे को ये बता सकते हैं कि इसमें इनपुट इनपुट ए इनपुट बी का कितना यूज हुआ होगा। यहाँ पे वो होगा इनपुट सी और इनपुट डी का। ये था 4:1। क्वेश्चन में ये बना है 80% 20%। तो आप ऐसे निकाल दो, 55 इंटू में 80 डिवाइडेड बाय 100, 44। और 55 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 100, 11। और ये है 50-50%। तो 210 का सी 50%, 105। इसी तरह 210 का 50% इज 105 डी। दिस वन क्लियर। तो हम देखते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। ये वैसे बनी गया मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। व्हाट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट? ए बी सी डी, 4 प्रोडक्ट, 4 आउटपुट। A B, this one not required, this one not required, this one 44 and 11। कैसे आया 44? ये कैलकुलेशन 4 आउटपुट, 4 आउटपुट, गुड आउटपुट सी डी। ए और बी का यूज नहीं होगा। 105 105। तो टोटल आपके पास आ गया मटेरियल रिक्वायरमेंट 11 44 105 105। चलिए हम सेकंड पार्ट पे, परचेज बजट। नेक्स्ट वन इज purchase A, B, C, D. Purchase budget. What is material requirement? अभी अभी जो आपने कैलकुलेट किया है, 44 11 105 105 at closing less opening you have purchases। अब देखिएगा क्लोजिंग और ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है। आई एम गोइंग बैक टू क्वेश्चन। ओपनिंग गिवन है 15 10 200 250। क्लोजिंग गिवन है 20 40 300 200। So I'm rewriting what is closing. Understand the pressure of the net operating working capital, and they can negotiate the same with the financial. However, the current research defined attractiveness according to different objectives. Financial attractiveness towards the cooperative Please mute institutions and yourself. customer. This Please mute differential yourself. definition can be explained by the fact that agricultural finance is adopted by financial companies as business instead of a Please research mute object yourself. Some one of you born not among the muted. supply chain players.
Someone of you not muted, please mute yourself. Please mute yourself, all of you. Okay. You are disturbing the class. Please mute yourself. Paridhi, The rest of the non-internet users do not use internet for the personal reason. so this will work out to be. Easily available to the mobile network devices like mobile phone. It can be seen that almost all farmers can easily access the internet and at least financial services as long as they are willing to use it. We conducted in-depth case study of Ali's practice in agricultural Paridhi is there. finance. I request you to mute yourself. Objectives can be strong drivers leading to the adoption of agricultural finance, especially ASCF solutions. The contribution of this paper is advancing knowledge about Uh, agricultural finance and sustainability lies in several aspects. First, the study Institute, introduces a comprehensive I sustainability request you to perspective make to me host to agricultural mute finance and gives everyone. empirical evidence on how an IT-enabled intermediate platform is motivated by the sustainability objectives to provide comprehensive agricultural finance solutions and how these innovative financial solutions contribute to sustainability. Second, ASCF solutions also supplement HCF practice. HCF can be adopted as an incentive to encourage sustainable IC operations in the Institute, supply chain. I request you to mute everyone. And financial attractiveness are also necessary top advantage for the companies to adopt. This research investigates agricultural finance at business and micro levels. Moreover, the financial service providers selected for this research is an e-business company with an online financial company instead of a traditional financial. Our case selection helped enlighten research on online finance providers. This study also provides rich and useful insights for the managers from retailing companies. Paridhi is not First, appear ethical. You are not muting yourself. So this will work out to be 49, 41, 205.
55. We multiply it by cost per ton. Cost per ton is given in the question. It is 500 per ton, 400, 100 and 200. So we multiply these two, and after multiplication we check out this is total purchases at individual level and total level. That is this into this we obtain 2500, 16400, 20500 and 11,000. Sum total of this, will give again total purchases at integrated level 72400. Am I right? Okay. If some of the students have old book, there are some more illustration. If you guys have new book, then this one was the last. This one is the last question. So my intention is that I will send some of the further illustration to you. Let's we go back to some theory part. Any doubt in this chapter? We have completed chapter 1 to 3. My next is zero based budget. I think we already covered it, but I want to go further in detail. What is the meaning of zero based budget? So please come back little and understand a little theory because this theory is important. What is the difference in fixed budget, flexible budget, and what is zero based budget? I think all the theory is important, but these two are very important. So I try not to avoid at any cost. Okay. Zero based budget is defined, which require each cost element be specifically justified. That means when we say each element is to be specifically justified, what it means, we have a different cost element like raw material, labor, overheads. तो हम इन सबको सारी आइटम्स को साइंटिफिकली जस्टिफाई करेंगे जिससे रिलेटेड हमें बजट प्रिपेयर करना है वो बजट हमारा फर्स्ट टाइम होगा राइट it differed from the conventional system because of budgeting start with the scratch or zero right when I say that is start from scratch what it means कि आप प्रीवियस डाटा को बेस लेके नहीं चलेंगे प्रीवियस डाटा को प्रीवियस कॉस्टिंग को सपोज लेबर की प्रीवियस कॉस्ट है ₹10 पर यूनिट तो आप उसको नजरअंदाज करके साइंटिफिक ग्राउंड बनाएंगे नहीं अब इसकी कॉस्ट या तो अप हो सकती है या डाउन हो सकती है that means it is different from the conventional system and it is different from conventional system and it is not based on trend not based on the historical level of expenditure historical system में क्या होता था what is happen in historical system आप लास्ट ईयर के डाटा को बेस लेके चलते थे इन कस्टमरी सिस्टम लास्ट ईयर फिगर वाज एक्सपेक्टेड उसके अंदर या तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है
आप उसको लेके चलते थे। लेकिन जीरो बेस बजट के अंदर जीरो बेस बजट के अंदर आप स्टार्ट करेंगे बजट बनाना विद without taking the ground of previous year. That's why it is say zero base. Read the word as zero base. Are you getting it? Together. Don't read it simultaneously. Zero base. Zero base budget कहाँ कहाँ एग्जिस्ट होता है? जहाँ पे आप एक्टिविटी फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो, वहां पे आपके पास कोई प्रीवियस ग्राउंड नहीं होता, राइट? और इस चीज का प्रूफ कि आप जीरो बेस बजट पे शिफ्ट हो रहे हो कन्वेंशनल सिस्टम से, फ्रॉम कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ बजट यू आर मूविंग टू जीरो बेस बजट। इस पे शिफ्ट होने के लिए मैनेजर को अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि या तो कॉस्टिंग में ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके हैं, या आपका एक्टिविटी का स्केनारियो पहले कुछ और स्केनारियो था, अब कुछ और, या वर्किंग कंडीशन या टेक्नोलॉजी चेंजेस इज कम, राइट? So, what are the steps if in preparing of zero-based budget? First one is zero-based budget is the first step of zero-based budget is you have to develop an operational plan जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट एक्टिविटी के लेवल्स होंगे। आप पहले उसकी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के अंदर आप एक्टिविटीज को इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटी। फिर आप चेक करेंगे कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यू हैव टू डिसाइड which activity is to be taken। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? ओके, थैंक यू। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जीरो बेस्ड बजट? फर्स्ट, जब आपके पास पुराना डाटा आउटडेटेड हो और इनएफिशिएंट, सपोज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, Nisha, is it audible now? Please reply. I think so. Yes, it is audible. First one, सपोज करते हैं आप किसी बिजनेस में थे और वो बिजनेस को थोड़े टाइम पीरियड के लिए बंद करके आपने दोबारा रीस्टार्ट किया। और जब आपने रीस्टार्ट किया तो उस डेट में और आज की डेट में कुछ डिफरेंस आया, राइट? यू हैव सम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एबीसी, आपने ए प्रोडक्ट को थोड़े से टाइम पीरियड के लिए अपने प्रोडक्ट सिस्टम से निकाल दिया था और अब उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ए। तो इस टाइम पीरियड से 2018 से 2019 प्रोडक्ट ए को जो आपने बंद किया और अब आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो डाटा होगा वो आउटडेटेड डाटा होगा, राइट? देन इट इज वेरी डिफिकल्ट you can follow conventional system of budgeting. So in this scenario you can follow zero based budget. It is the one of the advantage that outdated data और inefficient operation आपको पता चल जाएंगे, आप उसको easily identify कर सकते हैं। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आप उसको स्पॉन्टेनियसली या आपके हाथ या प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करके अपने बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक इसका और एडवांटेज है कि आप करंट प्रैक्टिसेस को ना एक्सेप्ट करते हुए आज की एनवायरनमेंट की चेंजिंग एंड क्वेश्चनेबल एटीट्यूड को अडॉप्ट कर सकेंगे। रिसोर्सेज का अच्छा एलोकेशन सही जगह पे सही टाइम पे हो जाएगा, और साइकोलॉजिकली हर एक्टिविटी को प्रॉपर टाइम मिल पाए।
right? Am I right? Please reply. Should I move forward? Okay. Now, what is the process? Process पहला आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास डिसीजन मेक करने की कितने एरियाज हैं, डिसीजन मेक करने की यूनिट्स क्या है। आप जो डिसीजन लेंगे वो यूनिट्स या प्रोडक्शन बेसिस पे लेंगे, आप टाइम बेसिस पे लेंगे, आप कॉस्ट बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। आपका एनालिसिस कॉस्ट सीपीयू बेसिस पे होगा, पीवी रेशो के बेस पे होगा। पहला ये आइडेंटिफाई करेंगे हम। उसके बाद आप डिसीजन मेक करने के सॉफ्टवेयर या पैकेज बनाएंगे। इसके बाद रैंकिंग देंगे। इसके बाद आप रैंकिंग देंगे एंड रैंकिंग देने के बाद आप अप्रूवल लेंगे और उसके लिए सफिशिएंट फंड का डिस्पोजल करेंगे। दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जीरो बेस बजट। नाउ नेक्स्ट वन, हम ये इलस्ट्रेशन सारे कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इलस्ट्रेशन करवाने वाला है तो करते हैं, नहीं तो वी आई वांट टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। If permission is granted, I am moving to next chapter. Okay. There is some I there is some question is given MCQ, fill the blanks, and question at the end. You can do it at your own. So one of the important chapter, standard costing. So आने वाली और next one or two classes में हमारा ये chapter भी finish हो जाएगा. Then for FM you may have uh, another schedule how it can be carried on. Okay, let's begin with some introduction and start a chapter standard costing. I'm asking you a question and please reply in chat box. Before we formally understand what is the definition of standard costing, nowadays, suppose आज की डेट में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं. Today you are starting a new business and suppose your investment is say rupees 20 lakhs. तो क्या करेंगे आप रिप्लाई कि आप आज की डेट में कौन सा न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, विच न्यू बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट. अगर अभी आप सीएमए ना कर रहे होते या सीएमए किसी कंपनी के बन चुके हैं और आप चाहते हैं कि कंपनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, तो कौन से बिजनेस में आप जाना चाहेंगे. यू आर सीएमए ऑफ अ कंपनी एंड यू वांट टू गो और इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. वन आंसर कम, ठीक है, थैंक यू. ऑनलाइन सेलिंग. ऑनलाइन सेलिंग में कुछ प्रोडक्ट का नाम जानना चाहता हूँ मैं प्लीज. ऑनलाइन सेलिंग में ओके.
प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक में भी क्या, मेडिसिन, ओके, मेडिसिन, ग्रोसरी, ऑनलाइन ग्रोसरी, ओके। सपोज करते हैं ग्रोसरी में ही जा रहे हैं, तो ग्रोसरी में क्या बेचना चाह रहे हैं, सारी आइटम, एक दो मेरे को आइटम बताइए, कौन सी आइटम्स, एक दो आइटम, एनी रफ, एनी आइटम्स, वन टू जो आप अपना रखना चाहें। ओके, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेस आर नॉट कमिंग, तो ठीक है, मैं अपना एग्जांपल को हाइपोथेटिक कर देता हूँ, रादर देन स्टूडेंट बेस्ड एग्जांपल, स्टूडेंट क्वेरी बेस्ड एग्जांपल, मैं इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैं ही एक कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ रिलेटेड विद प्रोडक्ट ए, और मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जब मेरे को उसको अब सेलिंग प्राइस पता है, इससे उसका सेलिंग प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट है मार्केट में, अगर मेरे को उसका सेलिंग प्राइस पता है कि मार्केट में उसका 20 रुपीज पर यूनिट है, तो क्या मैं चाहूंगा कि मेरी इसकी कॉस्टिंग, मेरी इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, प्रोडक्ट ए की कॉस्टिंग टू 20 रुपीज से ज्यादा रहे या कम रहे? रीजन व्हाई आई वांट इट टू बी लेस? Yes, I want it to be less because I want to earn profit. मैं चाहूंगा इसकी प्रॉफिट कहीं से ₹15 रह जाए। I want it less than say ₹20. अच्छा, now I want to raise one more question. कॉस्टिंग का पता चलाने के लिए मैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं, आई स्टार्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं, या पहले एक एस्टिमेट बना लूं? Which one is better approach? Post mortem or pre analysis? Which one is better? Yes, एक एस्टिमेट बना लिया जाए कि आपको तो पता ही है कॉस्टिंग के अंदर क्या, पहले डायरेक्ट मटेरियल लेके चलेंगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आएगा, उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके अंदर प्रॉफिट, फिर सेल्स, राइट? या तो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड होने पे इन सब का पता चला हो, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड होने पे इन सब का पता चला हो, और अगर आप एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड होने से पहले ही एक्चुअल डाटा के बेस पे आप ये सारा कैलकुलेट करें, या एक प्री एस्टिमेट बना लें, प्री कैलकुलेशंस, या एक एस्टिमेट बना लें। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा डायरेक्ट मटेरियल ₹2.50 के पैसे का आएगा, लेकिन आपने बनाया था ₹2.60 का। आर यू गेटिंग मी? जो आप प्री एस्टिमेशन का काम कर रहे हैं, इसी कॉस्टिंग को हम कहते हैं वन ऑफ द ब्रांच ऑफ कॉस्टिंग विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज रिप्लाई। ओके, सो हम किस किस का एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं? एक तो डायरेक्ट मटेरियल का, एक डायरेक्ट लेबर का,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्री एंड पोस्ट प्री एंड पोस्ट सेम होता है। तो हमारा फोकस मेनली प्राइम कॉस्ट के दो एलिमेंट में रहेगा। अभी तो प्राइम कॉस्ट के दो एलिमेंट में रहेगा। कौन सा? यस, मटेरियल और लेबर। सपोज कीजिए मटेरियल का आपने स्टैंडर्ड प्राइस लगाया 10 रुपीज और उसकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई से 12 रुपीज। तो आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? आपको लग रहा था कि नियर अबाउट हम मटेरियल पर यूनिट 10 रुपए का लेंगे, लेकिन उसका आया तो आपको नियर अबाउट 2 रुपीज का आपका एस्टिमेट शॉर्टफॉल रहा। आपका एस्टिमेट शॉर्टफॉल रहा। इस एस्टिमेट शॉर्टफॉल इज फेवरेबल और अनफेवरेबल? दिस इज योर अनफेवरेबल कंडीशन। और अगर यही आपका शॉर्टफॉल न होके 8 रुपीज का होता, तब स्कैनोरियो क्या होता कि आपने तो अंदाजा लगाया था कि कॉस्ट आएगी 10 रुपीज, एक्चुअल में आ गई वो 8 रुपीज, देन इट इज favorable by rupees 2. Or when it is 10 and actual cost work out to be 10, what we say? What we say, it is neither favorable nor unfavorable. That means आपका जो estimated या standard price था it is matched with actual cost. So it is balanced. So it is balanced or neutral. Am I right? Okay. With this introduction, we have हमने एक वर्ड पढ़ा था, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन या मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोल। सो हमने वहां पढ़ा था वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोल इज बजटरी कंट्रोल। वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक इज बजटरी कंट्रोल। अनदर टेक्निक ऑफ कंट्रोल इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग approach. Am I right, friends? Standard costing approach. So, what are the theory part we have to do? We have to read advantages of standard costing. We have to read limitation. But I must say there is a difference in uh, estimated cost and standard cost. लेकिन अभी for the time being मैंने इनको simultaneously same लिया है, but there is a difference in standard cost and estimated cost. but इन दोनों में difference है। Estimated cost is based on will be cost and standard cost is based on your should be cost, that is आपकी लागत। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर आप लेके चल रहे हैं तो एस्टिमेटेड लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर रियलिज्म में रह रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हो? स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहे हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ पास्ट फिगर्स को एवरेज बेसिस पे और कुछ एंटिसिपेटेड चेंजेस को ग्राउंड में ध्यान में रखते हुए चेक करती है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट का बेस्ड साइंटिफिक होता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर हम और क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि
स्टॉक का वैल्यूएशन भी कैसे होता है, ये भी स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर सीखेंगे। और हम यहाँ पे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडवांटेज और लिमिटेशन। हम इस चैप्टर को जब बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे तब ध्यान देंगे। मेनली जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, पहला टॉपिक प्राइम कॉस्ट में से, प्राइम कॉस्ट में से हम पहले एक तो लेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। डीएम DMCV is equals to direct material cost variance। अच्छा, अब वेरिएंस का मीनिंग आप ये मत ले लेना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये नहीं ले लेना, ये स्टैटिस्टिक्स में था, ये स्टैटिस्टिक्स में था। वेरिएंस का मतलब क्या है, डिफरेंस इन स्टैंडर्ड रेट्स या स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में होने वाला, स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस में होने वाला डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। हम हर टाइप की कॉस्ट वेरिएंस देखेंगे, राइट। सो थोड़ा सा ये फॉर्मूला बेस्ड है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल राइट सम फॉर्मूला and request you to prepare some formulas। अगर आप बोले तो हम नेक्स्ट क्लास में ही बहुत कुछ खत्म कर सकते हैं, फिर वन क्लास जो हमने किया है उसकी रिवीजन में भी दे सकते हैं इफ यू से लाइक दिस। और अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ भाई सर सारे एग्जांपल्स भी करवाने हैं, so you can write in chat box। In next class we start this one। Thank you very much guys for coming up in class। And थोड़ा सा आप अपना गियर शिफ्ट कर दीजिए दैट वी हैव टू गो फॉर मोर कैलकुलेशन, कि अब हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करनी है, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अप इन क्लास। Yes, I am sending you via WhatsApp group। I am sending you via WhatsApp group more example। So share it here instead of uh, one of the student asking for sharing it here, please share your email ID, I can mail it to you as well। This is old book, yes this is old book। Yes, sure, I will also send in group। Thank you very much।